रेखा आप हैं, जूम कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? मुझे को होस्ट बनाओ प्लीज। येस सर. हॅलो. मला सर बोलवत आहेत, मी तुला परत कॉल बॅक. मला सर ना बोलवत आहेत, मी परत कॉल बॅक करते. खुद का म्यूट करो और मुझे को होस्ट बनाओ. Okay, hi, good morning. So we meet again in a very short span of time. Isko, thank you, Rishikesh. And let me see. So, yeah, guys, put on your videos so that I can see your bright faces. Abhi kahan tak aa gaye hum ye kaun hai classroom mein? Let me first see that. Arushi, Manya, Rishikesh, and so who's behind Rishikesh? नहीं, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? जोर से बोलो. आरुषि गोस्वामी. आगे आओ, आप आरुषि या ऋषिकेश के आगे आके बैठो. ज्योति तुम बाहर हो क्या क्लास के? व्हाई डोंट यू एंटर? अंदर आओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट ज्योति? और ये ज्योति आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ. और 2 मिनट तक कोई लेट आता है तो आने देना. उसके बाद कोई लेट आता है तो बाहर खड़े कर देना उसको. अगर वो सेकंड टाइम है, अगर फर्स्ट टाइम वाला स्टूडेंट है तो अंदर आने देना. फर्स्ट टाइम है तो बाहर खड़े करना 5 मिनट, उसके बाद भेजना. और इनको बुक्स मिल गया है क्या? मैथ्स का नहीं मिला है तो आप लोग हेल्प करके देना. मिल गया है सबको? डू यू हैव योर मैथ्स बुक विथ यू? ओके गाइस, व्हिच यू विल नॉट नीड राइट नाउ. मैं स्पॉटलाइट बनाता हूँ खुद को, एंड दिस इज द स्पॉटलाइट. Let me create 2 spotlights right now. Okay, so these are 2 my spotlights and बाकी ऑनलाइन बच्चों को मैं देख रहा हूँ. Okay, guys, so you don't need match book right now, like we did yesterday. Let me have 15-20 minutes, maybe half an hour of Gyan session where we do all our theory part. Once we are done with theory part, though match book will also have theory, unlike your English book. Match book में theory है, but I don't need to refer it right now. You can only concentrate on the screen and my working space. उस पे काम करेंगे पहले. And once we are done with that, then we will refer your book to solve some specific questions. तो सबसे पहले चालू करते हैं. Are we good to go? Can we start? तनुष रेड्डी मुझे नहीं दिख रहा है कल से. प्रथा यादव नहीं है अभी क्लास में. अक्षता चिले है. आरुषि गोस्वामी वहां चली गई है. एक है कृष्णा देसाई. कृष्णा देसाई भी नहीं दिख रही है. ठीक है. Let me start. We are about time now. So इसको करते हैं add spotlight. खारगर को remove करते हैं. And I hope you are able to see my working space. Okay, guys. So we go for this SAT digital math. इसके साथ चालू करते हैं. We are talking about digital SAT ka math section. Now this hasn't changed a bit. Nothing has changed as such. The way it used to happen till December 2022 when it was paper pencil based, it is still happening the same way in terms of syllabus, scope, question type, options. Everything remains same. A very small change has happened in short answer type, which I'll just tell you. But otherwise आप देखोगे तो सिर्फ पेपर पेंसिल से वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है. अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड क्वेश्चन टाइप, जैसा रीडिंग में बहुत बड़ा चेंज आया, मैथ्स में कंपैरेटिवली आई कैन सेफली से देयर इज नो चेंज इन डिजिटल एसएटी मैथ. इट इज जस्ट लाइक it would happen during the older times when it was paper pencil based. So coming down to digital SAT maths, now if you understand digital SAT maths on SAT test, this is necessarily section 2. ये section 1 के बाद आएगा. Section 1 हमने कल देखा था, which was of 64 minutes if I remember correctly. ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था. After that you get a 10 minutes का compulsory break, and after that comes the math section, which is section 2 of digital SAT. This will also be divided further into 2 modules. ये 2 modules में divide होगा.
Module 1 and Module 2. Two modules, Module 1 and Module 2, where you will have on-screen calculator. You don't have to carry calculator. Each module will have 22 problems, 22 questions honge, and you will get somewhere around 35 minutes to handle each module. इसी तरह से Module 2 में you will have 22 problems and you'll have 35 minutes to handle ये वाला. So actually number of questions have gone down now. You get more time. So ये जरूर एक छोटा सा change आया है. This is how it will happen. All questions except I think some 5 to 10 problems would be MCQ based, where a single choice would be right. You will have 4 options. ये 4 option में से एक ही option right होगा. Multiple option right वाले इसमें नहीं आते हैं. And then you will have something called as short answer. इसके भी कुछ questions. I'll explain this part to you. तो ये short answer कैसे होता है या कैसे होगा? On your SAT day, when you are doing SAT on computer, blue book के ऊपर करना पड़ता है ये. The app is called blue book. When you are doing it, you will see a question will have a box. Inside this box, max 5 characters. Remember, मैं यहाँ पे numbers या digits नहीं बोल रहा हूँ, मैं character word use कर रहा हूँ. 5 characters are permitted, plus there could be one more character for sign, which is answer positive है या negative है. तो इस तरह से 5 characters होंगे. Let's say your answer is, guys, आपका आंसर आया 1/3. तो इसको एंटर करने के कई सारे तरीके हैं. 1/3 can be entered as 0.333. ये हो गए 5 कैरेक्टर. 0 and a decimal and 333. ये हो गए 5 कैरेक्टर. आप ये करेंगे तो भी आपको पॉइंट मिलेगा. 1, ये फ्रैक्शन वाला साइन आपने कीबोर्ड से टाइप किया होगा, and 3. आप ऐसे करोगे तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे. 3 ही कैरेक्टर आपने यूज किए. ये दोनों करेक्ट फॉर्म है आंसर एंटर करने का ऑन ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, अगर मान लो आपका आंसर नेगेटिव आया है तो आपके पास एक और साइन अवेलेबल होगा, -1/3 कर दे. राइट. दिस कैन ऑल्सो बी एंटर्ड एज डेसिमल 3333. ये भी करेक्ट होगा ऐसे भी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ये भी ठीक है. तो किसी भी तरह से एंटर कर सकते हो, ये करेक्ट माने जाएंगे. Am I clear here? Sir, so we have to enter all the 5 characters or? Good question. So मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ. क्या आपको all 5 कैरेक्टर्स करने हैं? क्या आपको राउंड ऑफ करना है? क्या आप ट्रंकेट कर सकते हैं? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. तो लेट्स से आंसर आया 2/6. अब 2/6 को एंटर करने का तरीका है कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, 6 नहीं 2/6 नहीं 2 क्या लें? 2/3 ले लेते हैं. 6 नहीं, बिकॉज 2/6 तो 1/3 हुआ. 2/3 लेते हैं. तो 2/3 आया तो 0, 6, 6, 7. आप ऐसे भी एंटर कर सकते हो. इसको आप 0.666 भी एंटर कर सकते हैं, मगर इसको आप 0.7 एंटर नहीं कर सकते. अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितना राउंड ऑफ करना है, कितना ट्रंकेट करना है, कितना अप्रोक्सीमेशन करना है? दैट मे बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस वेयर दे मे टेल यू कि उनको डेसिमल के बाद कौन से डिजिट तक आंसर चाहिए. सो हमको ये तो पता है दिस इज यूनिट डिजिट, देन यू हैव 10 डिजिट, इसको 1000 बोलते हैं एंड सो ऑन. सॉरी 100 बोलते हैं एंड सो ऑन. डेसिमल के बाद ये जो फर्स्ट प्लेस होता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? व्हाट इज दिस कॉल्ड? 10th. दिस इज 100th. सो दे विल टेल यू कि आपको डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट तक आंसर देना है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि मुझे कितना करना है, कितना अप्रोक्सीमेशन करना है. अगर उस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन होगा, इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. वो मेंशन्ड होगा. नहीं होगा तो ये दोनों आंसर एक्सेप्टेड है. ये जैसा मैंने एग्जांपल बताया, आप ये दोनों कर सकते हैं. राउंड ऑफ भी कर सकते हैं अगर मेंशन नहीं है तो, कि कहां तक राउंड ऑफ करना है, या फिर आप ट्रंकेट भी कर सकते हैं. आइडियली 5 कैरेक्टर भरो फिर. ओके.
Okay, So sir. when we do more problems, you will encounter various types of answers, and then we will see ये कैसे enter होगा. But guys, आपका answer decimal, whole number, fractions ऐसे वाले ही होंगे. डॉलर के साइन के साथ आंसर आ रहा है तो वहां लिखा होगा कि डॉलर का साइन इग्नोर करके आंसर लिखो. इसके अलावा कुछ नहीं होगा. पावर बेस्ड आंसर नहीं होंगे. योर आंसर, इफ योर आंसर इज 2 क्यूब, तो पॉसिबली आपको आंसर 8 करना है एंड 2 क्यूब नहीं एंटर करना है, बिकॉज क्यूब या पावर में एक्सपोनेंट्स में आंसर करने का ऑप्शन नहीं होगा. ब्रैकेट्स अवेलेबल नहीं होंगे. आंसर हमेशा इसी तरह से आएगा. So this is about digital SAT in terms of structure. There's one section with 2 modules, each module time limited 35 minutes, 22 problems per module, total 44 questions, 70 minutes milte hain. Of these 44 questions, you will see 30 odd are MCQ, which 5 to 10 problems could be short answer type. And short answer मतलब एक box जिसके अंदर type करना है answer. Okay. So we have student inside classroom. Just give me a second. Pratha and Manya तो पहले ही आ गई थी. Who's neighboring Pratha? कृष्णा देसाई. हाँ ठीक है. चलो guys, so हम लोग मैथ्स कर रहे हैं. I guess you have book other than Pratha. Everybody has book. मैथ्स का बुक है. प्रथा आप शेयर करोगे आज? हाँ, कृष्णा से या उधर मान्या के लिए आरुषि है, किसी के साथ शेयर कर लेना. चलो. Sir, I also don't have the book. Who's this? Sir, Tanush. तनुष मैथ्स का बुक नहीं है? नहीं है sir. Okay. आरुषि, you have your मैथ्स बुक right? दोनों आरुषि? हाँ. तो तनुष ऑनलाइन तो ये डिफिकल्ट होगा. मैं शेयर कैसे करूंगा क्वेश्चन? आई डोंट हैव एनी शीट विथ मी. ठीक है तनुष, आपके लिए क्या करेंगे, आई गॉट अ पीपीटी. मैं ना वो पीपीटी ओपन करूंगा और जो क्वेश्चन नंबर मैं इनको बताऊंगा आपको वो स्क्रीन पे पीपीटी फॉर्म में दिखेगा. आप उसको वैसे सॉल्व करना. ठीक है? Okay sir. हाँ, पीपीटी पे शेयर हो जाएगा आपके साथ. राइट गाइस, सो आई कम डाउन टू समथिंग कॉल्ड एज, एक मिनट, syllabus of SAT maths. एक बार वो देख लेते हैं and then some theory part before we go on to solving the problems. किधर है ये? So largely if you look into SAT syllabus and आप इनके official guide पे जाओगे, so you will see that they are using these fancy words. On SAT day or on SAT syllabus part, this is what you will hear. So there's something called as heart of algebra, which is basically algebra. So we'll talk about, and ये largely linear equation, linear relationship, simple number systems, ये उसके ऊपर based है. Inequalities, constructing linear equations, interpreting solutions, that is all heart of algebra, which has maximum weightage. Next maximum weightage है या next highest weightage है problem solving and data analysis, where you have ratio proportions and probability, statistics, a lot of word problems, exponential linear growth, all these things. Then the third topic is called as, or third area is called as passport to advanced maths. जिसमें exponents हम पढ़ेंगे, some part we'll do today also. Quadratic, parabola, functions, transformation in functions, ये सब passport to advanced maths में है. And then there are some additional topics. इसका सबसे कम weightage है. So volumes, little part of geometry, complex number, थोड़ा सा trigonometry, some part of circles, triangles, ये सब additional topics है. So this is how they call it. Heart of algebra on a given day should be something like 33%. Problem solving another 25%. So first two topics 60% होंगे. Passport to advanced maths 15 to 20%. And बाकी बचा हुआ 10-15% last वाले topic का weightage है. This is how your SAT maths is. If you look at this, you will see that most of these topics you would have done till standard 10th, irrespective of 10th के बाद आपने क्या लिया है. Barring few topics like functions. ये CBSE, ICSE वाले बच्चे नहीं करते हैं, अगर किसी ने IB बोर्ड से किया तो ये भी किया होगा. Complex numbers,
ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंसेस तो सबने किया होगा, बट कुछ बेसिक और रेशोज, राइट, वॉल्यूम्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एक्सपोनेंट्स, रेडिकल, सिंथेटिक, क्वाड्रेटिक्स में भी आई थिंक पैराबोला का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर नहीं किया होगा तो थोड़ा सा वो पार्ट, बट अदरवाइज यू वुड हैव डन ऑल दीज टॉपिक्स। ये जो रेड सर्कल के बाहर हैं, you will see that you would have done maximum of them, including inequalities, I guess. अगर नहीं तो maybe inequalities also in your up till your 10th standard. कुछ topic बहुत introductory levels हैं उनका, functions, trigonometry and complex numbers that we will do, जो 11th में generally बच्चे करते हैं. So even if you have not taken maths in 11th standard, don't worry. While you are in UT class, the faculty would give you required number of inputs on these topics. उसके बाद ही हम questions करेंगे, so that SAT में जब ये questions आएंगे तो हम इनको handle कर सकें. So this is about it. Let me stop share and now let me go to my working space. And we start with SAT Maths Chapter 1. And let me ask some questions. So Madhav, we start with you क्योंकि तुम्हें मुझे screen पे सबसे पहले दिख रहे हो. Madhav, how would you define natural number? What do you mean by natural numbers? कौन से numbers को natural numbers बोलते हैं? Madhav Arora. So starting with 0. Starting with 0. 0. Madhav? Sure, starting with 0. Pritha Yadav, can you please help Madhav understand what do you mean by natural numbers? Define natural numbers for me. And be a bit louder. नहीं बेटे, I am not able to. तुम why don't you, मालूम नहीं इन्होंने कौन सा माइक कनेक्ट किया है. सबसे पहले वाली बेंच पे आओ पृथा. या आंसर देने के लिए ना आगे आ जाओ, वहीं बैठी रहो, सिर्फ आंसर देने के लिए खड़े होके आगे आ जाओ, so that I am able to hear you. 1 to 3 पर इसके बाद 0 and negative correct in natural numbers. एक मिनट. Let me also look at you. Yes, now go ahead. 1 2 3 4 हो सकता है, 0 negative नहीं, natural number. So what she's saying is natural numbers are numbers which are all these counting numbers. 1, 2, 3, 4, all the way up till positive infinity, right, Pritha? Something that you can possibly count on your fingers. 0 count नहीं कर सकते, ये natural numbers का set है. So 1, 2, 3, 4, 5, all these counting numbers are natural numbers. Tanush, what do you mean by whole numbers? Whole numbers are numbers that start from 0, 0, 1, 2 up to positive 0 plus infinity. all Negative natural numbers numbers. are not included. 0 एक और ऐड कर दो नेचुरल नंबर्स के सेट में, ये हो गया होल नंबर्स. Yes, sir. मान्या, इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स मान्या. So there is also negative number. So whole numbers and you add all your negative numbers to it, 0 and so on, you'll have integers, right? Arushi and any Arushi, दोनों में से जिसको ये question इस question का आंसर आता है. How would you define rational number for me? Rational number is any number which can be represented in the form of p by q and q is not equal to 0. तुम्हारी आवाज इतनी क्लियर कैसे आती है? P by Q where Q is not equal to 0. Somehow, you know, I think ये कुछ होगा कैमरे में, कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो बहुत अच्छे से कैप्चर करता है. एंड माधव एंड आयान वारेकर ये लोग कल थे मेरे साथ, दे विल एग्री, तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर आती है. So P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are what are P and Q? Real numbers. Real numbers. Are real numbers. ये real number के सेट. आरुषि गोस्वामी, you don't agree? हाँ, तुम ऐसे वाले looks दे रही हो, ये सही नहीं है. Do you agree? ये rational number होता है any number that can be represented in the form P by Q where denominator Q cannot be equal to 0 but P0 हो सकता है
P और Q दोनों रियल नंबर्स हैं, ऐसे डिफाइन किया है आरुषि ने. डू यू एग्री मिस गोस्वामी? Yes. You agree? अच्छा. तो what about 1/3? Is it a rational number? Yes. Okay. What about 5? Is it a rational number? Yes. Yes. And Arushi, what about this? Arushi Goswami. 22/7. ये rational number है कि irrational number है Arushi? Something special about 22/7, Arushi Goswami? It's the value of pi. This is value of pi. This is value of pi. तो ये rational है कि irrational है Arushi? Irrational कैसे? Something represented in the form P by Q, where Q is not equal to 0, and both of them are real numbers. Real numbers मतलब वो सारे numbers, integers plus all your fractions, decimal numbers, ये सब real numbers हैं. जो भी आप 2D ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, उसको रियल नंबर. अच्छा, रियल नंबर तो हमने डिस्कस नहीं किया. रियल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच आई कैन प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन. पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब मैं प्लॉट कर सकता हूँ. वो याद है वो राउंडर यूज करके, मुझे नहीं मालूम अब कोविड में हटा दिया गया वो सिलेबस से, √2 को प्लॉट करते थे और इस तरह से प्लॉट करते थे. ये सब रियल नंबर्स होता है. तो ये पाए, ये जो 22/7 है, आप इसको इरैशनल क्यों बोल रहे हो? ये तो P by Q के फॉर्म में. एनी आइडिया? अक्षता चले, अयान वारेकर, नो आइडिया. यक्ष त्रिवेदी, बताओ, पाई रैशनल है कि इरैशनल है? irrational sir, irrational. पाई इरैशनल है. ओके, अगर पाई इरैशनल है तो 22/7 जो उसका वैल्यू है वो रैशनल है कि इरैशनल है? वो भी इरैशनल हुआ ना उसी लॉजिक से. Because it's not ending sir, the decimal. सो मेरा क्वेश्चन ये है, यस, सो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो यक्ष बोल रहा था अभी लास्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर? व्हाट इज एक्चुअली रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर? तो ये अच्छा डेफिनेशन है, बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. लेट मी यूज अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर रैशनल एंड इरैशनल. एनी नंबर दैट इज, इरैशनल को डिफाइन करते हैं, दैट इज नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो वो नंबर खत्म होता है, नॉर रिपीटिंग, रिकरिंग. अगर वो नंबर खत्म भी नहीं होता और अगर वो नंबर रिपीट भी नहीं होता, कोई उसमें पैटर्न भी नहीं है, तो वो इरैशनल है. बट अदर देन दैट, एनी नंबर विच इज टर्मिनेटिंग, या तो वो खत्म हो जाए, और इट इज रिपीटिंग, रेकरिंग, उसमें कुछ पैटर्न है, तो ये नंबर रैशनल होगा. सो फॉर एग्जांपल 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5. ये टर्मिनेट हो गया, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है. लेट मी गो टू अ न्यू पेज. 1/3, 0.3333 एंड सो ऑन. ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, बट ये रिपीटिंग है, इसमें पैटर्न है, हेंस दिस इज ऑल्सो अ रैशनल. मगर जो नंबर खत्म भी नहीं होता है और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, तो फिर हम उसको इरैशनल बोलेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं 22/7 पे. तो क्या एक्चुअल में 22/7 एक रैशनल नंबर है? लेट्स सी गाइस, मैं ये पेन हटाता हूं यहां से. 22/7, चलो इसको डिवाइड करते हैं. 22/7 ऐसे करते हैं डिवाइड. 7 3s are 21, 1.0, 7 1s are 7, 4 0 7, सही कर रहा हूं मैं, सॉरी, 3 7 4s are 28, 2 0 7 2s are 14, 6 0 7 8s are 56, 6 4. बताते जाना अगर मैं कहीं भी गलत कर रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा ये. 40, क्या आएगा? 7 5s are 35, 5 7 7s are 49, 1 0 7 1s are. अब आप देखो ये रिपीट होगा. 142 857, 142 857.
पाई का वैल्यू होता है 22/7, अभी आपने मुझे बताया, मगर 22/7 इज अ रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है मगर रिपीट हो रहा है, तो 22/7 इस लॉजिक से तो रैशनल हो गया। मगर हमने थियरी में पढ़ा है कि पाई इरैशनल है। प्लीज सॉल्व दिस डिलेमा। यक्ष, अयान खत्री, अयान वारेकर, कोई तो हेल्प करो, पीपल इन क्लास। Pi is the 22/7 is the approximate value of pi, Yes, not who the said actual value that? of pi. Who said that? Ayan Khatri. ओके, गुड। तो ये जो 22/7 है ये इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये इसका रियल वैल्यू नहीं है। सो प्लीज डिफाइन पाई फॉर मी। हाउ वुड यू डिफाइन पाई? पाई का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन चाहिए मुझे पाई का। Circumference of the circle divided by the diameter. Pi is actually ratio, fantastic, very good. Pi is actually ratio of circumference of circle upon dia of circle. ये होता है पाई का डेफिनेशन। And that's why pi is a unitless quantity. Pi की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि रेशियो है, रेशियो में यूनिट होता ही नहीं है किसी भी चीज का। So this is the definition of pi. And if you actually calculate pi, इसका value आप निकालेंगे तो you will see there is no pattern into it and there is no termination into this. So pi is an irrational number. Irrational numbers are numbers which are neither terminating nor repeating nor recurring. Whereas इसको छोड़ दो बाकी सब rational है, या तो वो नंबर खत्म हो जाए 5, 1/2, या वो रिपीट हो 1/6, 1/11, 1/11 is 0, 9, 0, 9, 0, 9, वैसे चलता जाएगा। So it has a pattern. So if it has a pattern, it becomes rational. Am I clear on this? ये सब समझ में आ गया? Yes, sir. अक्षता चले बोलो। Yes, sir. So nobody in SAT will ever ask you what is rational, what is irrational, integer क्या होता है, ये सब क्या होता है. But the point is you will get application of questions where if you don't understand the meaning or concept behind that, you will not be able to crack it. कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे. तो इसलिए ये बेसिक चीजें हम कर रहे हैं अभी. ठीक है? Which numbers are called as even numbers? Even कौन से numbers होते हैं? हाँ जी, Which are divisible by 2. numbers which are divisible by 2 are called even numbers. 2 के multiples are even numbers. Divisible by 2, remainder 0 are even numbers. Odd numbers जो even नहीं है वो odd है, right? ये even और odd का बहुत simple सा concept है. अभी quickly कुछ operations करते हैं and let me do this operation with Tanush. Tanush unmute करो. Yes, sir. So when I add two even numbers, Tanush, what will I always get? Even number. I will always get an even number if I add two even numbers. What if I add two odd numbers? Can you say what will I get in terms of even or odd? Even. I will always get even number. What if I add an even number and an odd number? Odd number. I will always get an odd number. इसी तरह से तनुष continue. Even into even will always give me. Even. Odd into odd will always give me. Sir, odd. Always will give me odd. What about or even into odd? Even. Even, not odd. If you multiply an odd number 3 by an even number 8, you will always get an even number. ये दिखने को समझने को this is so basic, 4th 5th standard वाला बच्चा भी जानता है ये सब. I will show you some problems where application of this concept creates a lot of confusion in terms of how intelligently and beautifully SAT people ask the concept. वो देखेंगे हम. तो ये हो गया even and odd का concept. ये सब clear है हमको? Yes, sir. Now, let me go to Khargar classroom and let me talk to. तो अभी हम बहुत basic सा revision कर रहे हैं. There is nothing much of mathematics as such we are doing. So if I ask Rishikesh, this is to you. Okay, what do you mean by prime factors, Rishikesh? Prime factors का क्या मतलब होता है? Which are have factors, it's itself number and 1.
वो तो प्राइम नंबर्स है. Prime numbers are those numbers which have their factors as number 1 and themselves. So for example, 7 has the factors of 7 are 1 and 7 itself. तो जिन नंबर्स के फैक्टर्स केवल दो फैक्टर्स हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स हैं. और प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? सर इसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हो. Okay, so prime factors, if you understand, prime factors are when you express a original number in form of prime numbers that are multiplied together to get an original number. So if I have a number like 10, 10 can be written as 2 into 5. Now, both these numbers are prime numbers. I've expressed 10 as, multiplication of prime numbers. Hence, ये इसके prime factors हो गए. Multiples किसको बोलेंगे? Multiples, a number that can be divided by another number without giving remainder. So, if a number can be divided by another number, giving you remainder 0, then this number जिससे आपने divide किया है, rather जो number divide हुआ है, उसको हम multiple बोलते हैं. Simple things. Similarly, एक division algorithm है जो याद होना चाहिए आपको. If you remember division algorithm, it says क्या होता है वो algorithm? Dividend is equal to, याद है किसी को? Divisor into quotient plus remainder. So the Euclid's division lemma. कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा नहीं. हाँ जी. So Euclid's division lemma. Yes. We learned in 10th. So Euclid division dilemma ये इसमें आता नहीं है, ये SAT का नहीं है, बट आपको एक ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए. रैशनल इरैशनल याद होना चाहिए और इसी तरह एक्सपोनेंट्स याद होनी चाहिए. What do you mean by exponents? What are exponents? So if I tell you 8 to the power 2, exponent का क्या मतलब है इसमें? What is 8? 8 is the exponent. नहीं 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 नहीं. Exponent. 8 is called as base. This is called as power or index or exponent. Exponent का बहुत सिंपल सा मतलब है number of times that number is multiplied by itself. So 8 will be multiplied twice. अगर ये 8 to the power 4 होता, 8 will be multiplied 4 times by itself. 8 into 8 into 8. ये exponent. इसमें कुछ बहुत बेसिक से रूल्स हैं. क्विकली वो रूल देख लेते हैं. ये सब रूल आपके बुक में होंगे, बट अभी हम रिवाइज कर लेते हैं. If I have a to the power n into a to the power n, this can be written as, बोलो guys, A to the power m plus n. A to the power m. power m plus n. तो अब अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. इसी तरह a to the power m divided by a to the power n, A to the power m minus n. a to the power m minus n. ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है इसमें पढ़ाने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है. If it is a to the power m to the power n, A to the power m. a to the power mn, m into n, m के ऊपर पावर मत लगा देना n का. तो अगर ये ऐसा है a to the power 3 to the power 2, ये हो जाएगा A to the power 6. a to the power 9 मत कर देना या a to the power 5 मत कर देना. m into n हो जाएगा ये. ओके. इसी तरह से a into b to the power m can be written as a to the power m into b to the power m. ये से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिफ्थ वन, a to the power minus m, 1 by a to the power m. इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो और साइन हटा दो. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. और एक लास्ट ले लेते हैं, a to the power 0, a to the power anything to the power 0 is 1. ये कुछ बेसिक चीजें हैं that I would want you to remember. एक और आई थिंक एक 7th वाला भी है. वो क्या है? a divided by b to the power m can be written as a to the power m b to the power m. वैसे लिख सकते हैं.
तो ये कुछ बेसिक पावर के एक्सपोनेंट्स के रूल हैं which can become an intermediate step in solving questions. ये आपको याद रखना है। ठीक है, अयान खत्री आगे बढ़ सकते हैं। आरुषि गोस्वामी बोलो। Yes, sir. आरुषि गोस्वामी, what is 0 to the power 0? कृष्णा देसाई, what is 0 to the power 0? देख रही हो बुक में 1. Okay. Any other answer, guys? Nothing to the power nothing is something. ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? Sir, 0. और उसके पावर पे भी कुछ नहीं है. 0 to the power 0. What do you guys say? Everybody agree this is 1? No. Not defined. Sir, not defined. हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं ये 0 हो. तो actually you guys are right. You know, we don't really know, because you know there's a debate in this mathematical circle. ये जो भी mathematics के पंडित हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भाई एवरीथिंग एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है तो वैसे 1 हो जाना चाहिए, बट 0 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है उसके ऊपर 0 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो 1 हो गया तो कैसे आ गया, तो ये 0 भी कैसे हो गया? तो आंसर इसका यही है, इनडिटरमिनेंट या अनडिफाइंड या नॉट डिटरमाइंड, ऐसा ही मान के चलो, इसको तो ऐसे ही लेके चलो। बट एनीवे ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से, ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान रखना। ओके, my last question and then we go to problems. What kind of relationship is called as linear relationship? कौन सी relationship को आप linear relationship बोलोगे? या और सिंपली पूछता हूं मैं आपसे, what do you mean by linear equation? चलो ये define कर दो मुझे। linear equation क्या होता है, या फिर linear function क्या होता है, या फिर linear relationship क्या होती है, कुछ भी define कर दो, anything. It's straight graph, straight line हो गया. Who was that? ये straight line वाला किसने बोला? बताओ। Rishikesh. So Rishikesh says that linear equation or linear function or linear relationship is something where the graph of that thing is a straight line. That is one definition. Good. Rishikesh, इसको hold करते हैं, I'll expand more on this. मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें तुमने गलत बोला है सही बोला, but whatever you have said is a very important point. I will hold on to that. Any other way to describe linear equation, linear function or relationship? Power of variable is 1. Power of Variable is 1. power of variable. Now variable एक नया word आ गया. Okay, so variable is something जिसकी value change होगी with respect to some other unit with respect to time. So linear, let's say if I have two variable x and y, and if I have to put a equation or a function or a relationship between them, so let's say मैंने इसको ऐसे define किया, y is equal to x plus 5. So the equation that is coming from class is, if power of equation, power of variable is 1, then it is a linear relationship. Okay. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x to the power 1 plus 5 x to the power half plus 10. क्या ये linear relationship है? highest power 1 है, order 1 है जिसको आप लोग बोलते हो, क्या ये linear equationship है? ये linear equation नहीं है, because any relationship or equation or function, if it has to be linear between two variables, तो जो ऋषिकेश ने बोला वही governing condition है. When plotted on an xy plane, I should always get a straight line. वो straight line कैसे भी हो सकता है, but I should always get a straight line. मुझे हमेशा एक straight line मिलनी चाहिए. If plotted on xy Cartesian plane, when relationship is plotted, then I should always get straight line. अगर straight line नहीं मिल रही है, तो relationship between x and y, x is generally called independent variable, y is called dependent variable. It is not a linear relationship. बोलो ये क्लियर है? और हमने एक बार पहले भी देखा था, या आपने 9th-10th में देखा होगा, that equation for a linear equation, इसका एक standard form होता है. क्या है वो standard form of linear equation? Ax plus by plus c equal to 0. Perfect. Ax plus by plus c
equal to 0, where A, B, C are constants and A and B are coefficient of X and Y respectively. X is your independent variable, Y is your dependent variable, meaning X and Y are variables. ये standard form है linear equation का, which means if you plot this equation on a graph paper, you should get a straight line. What straight line कैसी भी हो, but straight line मिलनी चाहिए भैया. Straight line मिलेगा तो ये equation linear equation है. A, B, C are constant, A and B are coefficient of X and Y are variable. Right? इस equation को मैं एक दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ. This equation can be converted into, because I am getting a straight line, I can convert this equation into equation of a straight line. Anybody who remembers equation of straight line? Straight line की क्या equation होती है पता है? Y equals mx plus c. Y is equal to mx plus c. देखो अक्षता, चले ये सब समझ में आ रहा है क्या तुमको? Please come in, Akshata. Are you there in class? You are. Yes, sir. So कहाँ तक समझ में आ गया आपको? So y is equal to mx plus c. ये समझ में आ गया? Yes, sir. That is for the equation in one line. ये पढ़ा है पहले equation of straight line आपने कभी? No, sir. तो समझ में क्या आ गया? अभी तो हमने इसकी बात ही नहीं की. ये equation समझ में आ गई? The one where I put a tick. This is standard form of linear equation. ये standard form है. क्योंकि इस फॉर्म से आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करने का एक और तरीका है जो अभी आयान वारेकर ने बोला. तो उसने कहा सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ए बी गायब हो गया और ये वाला सी इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला सी. वो बोलता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let me rewrite this equation and I'll write this equation as by is equal to minus c minus ax, or y is equal to minus a by bx minus c by b. और जो आयान का इक्वेशन है उसमें ये m हो गया और ये वाला पार्ट c हो गया. बस यही किया उसने. तो for all practical purpose in SAT guys, this is a super important equation. Y is equal to mx plus c. नहीं करते भी 4 to 5 problems इस क्वेश्चन में indirectly इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे. कॉन्सेप्ट कौन सा? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन बोले तो लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. Am I making sense? Both are issues. जहां पे समझ में नहीं आएगा प्लीज बोलना, और अगर मुझे सुनाई नहीं दे रहा होगा और आप बोल रहे होगे क्योंकि ये क्लासरूम में, तो ये मॉनिटर के पास आ जाना. मॉनिटर के पास जैसे ही आओगे तो उसका वो जो माइक्रोफोन है वो कैच कर लेगा आपकी आवाज, तब तो मुझे पक्का सुनाई देगा. तो डू नॉट हेजिटेट, जस्ट स्टैंड अप, कम टू द मॉनिटर एंड स्पीक इन केस आई हैव नॉट रजिस्टर्ड योर रिक्वेस्ट और कंप्लेन और ऑब्जेक्शन. तो y is equal to mx plus c, ये लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं थियरी का. This is a very I've run out of pages. This is a very important concept that I am going to do right now. अब इसको करते हैं. Y is equal to mx plus c. ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, where if I plot it on a graph paper, I will get a straight line. मुझे एक straight line मिलेगी. तो let's say ये वो straight line है जिसकी इक्वेशन यहाँ ऊपर दी हुई है. अब इसमें एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं. गाइस, जब भी इस तरह से इक्वेशन आएगा y is equal to mx plus c, इसमें जो x होता है this is independent, ये कन्वेंशन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक ये वेरिएबल है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट होगा. हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ एक्सिस, इसके ऊपर एक्स प्लॉट होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेट्स से, अच्छा अभी रुको, ये आगे देखते हैं. ये एक्स का वैल्यू है. y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल which will be mostly on the vertical axis, खड़ा हुआ एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे y प्लॉट होगा. ओके,
लेट्स, तो मैंने x डिफाइन किया, दिस कुड बी प्राइस and y could be demand, you know, or demand and price, or kilometers and total fares. So depending on how many hours you put could be x, and y could be your marks on SAT paper. कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया, x वेरिएबल, मार्क्स क्या आया SAT में, y वेरिएबल. So x and y, these are variables where y का value is dependent upon x का value, hence this is dependent variable. If you increase the price, demand will go down. If you increase the price for iPhone, demand may go down, negative relationship. Okay. The more you travel on your Ola, Auto, Uber, Auto, more fares you will get. Higher the kilometer, तो ये हो गया kilometers traveled, more the fare of Ola or Uber. Y हो गया dependent variable. ये सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Let's come down to C. ये डिफाइन करते हैं. What is C, guys? इस इक्वेशन में C क्या है? बताओ. Correct, sir. Y की वैल्यू पुट करने के बाद जो आता है वो C. मुझे इंटरप्रिटेशन या मीनिंग चाहिए C का. जैसे आपने X को एक मीनिंग दिया, Y को एक मीनिंग. Constant term. Very good. This is called as constant term. This is also called as fixed cost. अगर ये cost equation है. This is also called as sunk cost, starting cost. This is also called as starting value. This is also called as value of y at x equal to 0. इतने सारे नाम हैं इसके. This is also called as initial value. C stands for constant. It's a constant. ये कोई वेरिएबल नहीं है. इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको संक कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग वैल्यू भी बोलते हैं, इसको वैल्यू ऑफ y भी बोलते हैं x इक्वल टू 0. ये देखो भैया, ये वो पॉइंट है, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, लेट मी मार्क दिस पॉइंट. ये वो पॉइंट है जो रेड एरो से आपको दिख रहा है. यहाँ पे x की वैल्यू 0 है कि नहीं? So C is nothing but value of y when x is 0. Right, Ayan Khatri, you agree with us? Yes, sir. तो जब आप ओला उबर बुक करते हैं तो वो ओला वाला बोलता है बुकिंग के साथ ही 50 रुपए तो आपके लग गए, अब आप ट्रेवल करो कि नहीं करो. एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. तो वो जो 50 रुपीज है वो इनिशियल कॉस्ट हो गया. लेट्स से यू रन अ बेकरी. अक्षता चले, अक्षता, लेट्स से यू रन अ बेकरी. Yes, sir. अब बेकरी में केक आपका कितना भी बिके, वो जो बेकरी का रेंट है वो फिक्स है. Yes, sir. लॉर्ड है वो बोलता है मुझे मतलब नहीं आपने कोविड में पूरा बेकरी बंद रखा या आपने चालू रखा, मुझे मेरा रेंट चाहिए. दैट इज द संक कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. कितने भी केक पेस्ट्री सेल करो, रेंट चेंज नहीं होने वाला है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेंज हो सकता है. इफ यू बेक लेस केक्स, लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल. इफ यू बेक मोर केक्स, मोर इलेक्ट्रिसिटी बिल. बट रेंट विल नॉट चेंज. अक्षता समझ में आ रहा है? Yes, sir. So basically rent of that bakery shop becomes C, constant, which will not change by changing X. So this is constant. ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. अब इसको मैं थोड़ा सा और डीप, जहां समझ में नहीं आए मुझे रोकना. एंड सिमिलरली खारगर क्लासरूम में. Pritha, am I making sense? What about Manya Shrivastava? ठीक है. So this question is to Arushi ZADE. Have I got your surname right? Yes, sir. So मुझे ये बताओ, what will you tell me about the graph if C is equal to 0, if C is a positive value, and if C is a negative value? ये समझने की कोशिश करते हैं गाइस. क्या होगा अगर किसी लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन में C 0 हो जाए? तो क्या मतलब है उसका?
सी पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसका क्या मतलब है, और सी नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका क्या मतलब है। तीन अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस लिखते हैं। आरुषि, वी स्टार्ट विथ यू। लाइन में जीरो, मतलब जो लाइन होगी इट विल मतलब y एक्सिस पे जहाँ पर जीरो। हाँ वेरी गुड, मैं नहीं नहीं सही बोल रही हो। तो y एक्सेस पे जहां पे जीरो होगा, ये लाइन y एक्सेस को वहां पे कट करेगी। origin तो बेटे y एक्सेस पे जीरो कहाँ होता है, क्या बोलते हैं उस प्लेस को, अभी किसी ने बोल दिया था बीच में, क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। वेरी गुड। तो अगर c जीरो है गाइस, तो मेरी लाइन, ये सब जो मैं बना रहा हूं, होप ये दिख रहा होगा, ये ओरिजिन से पास हो रही है। ऋषिकेश, डू यू एग्री बेटे? तो अगर c जीरो है, पक्का लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अयान वारेकर, यश त्रिवेदी, मुझे बताओ अगर इसमें कुछ डाउट्स हैं तो। No, sir, no doubts right now. Oh, sir. So Yash Trivedi, next question to you. What if C is positive? What can you tell me? ये तो origin से पास हो रही है, that's what you have told. Yash, what if C is positive? Can you tell me about the nature of the graph? Sir, the values of x and y will be positive. Values of X and Y will be positive? नहीं, थोड़ा सा और सोचो. Means the line will pass from the first quadrant, means like this. Line will pass from the first quadrant. अभी ना मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब हम क्वाड्रेंट पे आएंगे। अगर अक्षता भी ये क्वाड्रेंट वर्ड और ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने का नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। एनीबॉडी एल्स हु वुड वांट टू, मैं समझ गया जो यक्ष बोल रहा है, बट आई वांट इसका इंप्रूवमेंट। हाँ ऋषिकेश बोलो। Sir, intersection of straight line at positive y-axis at distance c. Okay, so what he's saying is if C is positive, line will cut y-axis above origin. अगर C पॉजिटिव है तो लाइन y-axis को origin के ऊपर काटेगी। With the same logic, अगर C नेगेटिव है तो लाइन y-axis को origin के नीचे कट करेगी। बोले समझ में आया? Yes. तो मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एसएटी में क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको इक्वेशन दे दिया और 4 ग्राफ दे दिए और बोला बताओ कौन सा ग्राफ है। जस्ट बाय लुकिंग एट सी कि सी का क्या वैल्यू है, आप कई सारे ऑप्शन, हो सकता है 3 ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दो एंड 5 सेकेंड में वो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, लीनियर इक्वेशंस। हम हार्ट ऑफ एल्जेब्रा हमने चालू किया है, वो कर रहे हैं। Am I good? यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये सब सही है? ये सब सही लग रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यक्ष बोलो। तो यक्ष, आई अंडरस्टूड कि तुम जो बोल रहे हो यही बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये लाइन ऐसे काटेगी, बट पॉसिबली सिर्फ ऋषिकेश ने उसको बेटर पुट कर दिया। ठीक है, तनुष आगे जा सकते हैं? Yes, sir. सो तनुष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, विल पुट अ क्वेश्चन टू यू नाउ। नहीं, माधव बहुत देर से चुप बैठा है। माधव, दिस इज फॉर यू। yes sir. Let's come down to the main, you call it villain or you call it hero. अब सबसे पहले इस पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया हमारी कहानी का पात्र। Let's talk about him. Madhav, any idea on this person called M? इसके बारे में क्या बता सकते हो मुझे? M, ये M कहां से आया? ये M, ये वाला M है, मान्य? गॉट इट? ये जो x के आगे m लगा है ना, कोएफिशिएंट बन के m का, x का जो कोएफिशिएंट बना हुआ है m, अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने x को डिस्कस किया, y को डिस्कस किया, c को डिस्कस किया। बताओ माधव, m, व्हाट इज m? M is minus a by b, so we have come to the conclusion by the sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी इसको डेवलप करते हैं, बट कंक्लूजन पे आ गए कि नहीं मालूम नहीं। पृथा यादव, व्हाट डू यू से? यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? नो आइडिया? हाँ चलो, आई कैन नॉट इवन से।
हाँ, Sir, the M will be equal to the slope, right? The slope of the line. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I think we have here a power loss. So मुझे थोड़ा सा time लग गया alternate source पे आने के लिए. Let me go back. Add spotlight. Akshata, you were saying something. The M in the equation will be equal to the slope, right? M is called slope of line. ये जो straight line है उसका slope बोलते हैं. Correct. What else? So the slope. Sorry. So the slope will be equal to the change in y divided by the change in x. Wow. So this is also called as change in y. मैं ऐसे लिखता हूँ. Upon change in x. Wow, Akshata, तुमको तो आता है ये सब. Good. और क्या? Any other name? Sir, it will. Is somebody saying gradient? कोई gradient बोल रहा है क्या इसको? Rishikesh, are you saying something? I am saying that it will be equal to tan theta. This is also called tan theta. ये जिनको ये फ्रेंच और ग्रीक लग रहा है, अभी रुको, अभी सब क्लियर हो जाएगा. अभी तो सिर्फ इसके अलग अलग नाम लिखते हैं. So M is called slope. M is called change in y upon change in x. M is called as tan theta. M is called as gradient of line. Anything else, guys? M is called as Sir, rate of change. Yes. so you can write it as y2 minus y1 by x2 minus x1. Ayan Varikar बोल रहा है, this is y2 minus y1 upon x2 minus x1. अमेरिकन लिटरेचर में इसको बोलते हैं राइज ओवर रन. अगर आप कुछ एसएटी की बुक्स पढ़ोगे बाय अमेरिकन ऑथर्स, ये y2 minus y1 upon x2 minus x1 को बोलते हैं राइज अपॉन रन. अगर ये जो अयान ने बोला, अगर तुम देखोगे तो दिस इज नथिंग बट दिस पार्ट, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. यही है ना अयान? कितना y में चेंज हुआ, विच इज वर्टिकली, इसलिए इसको राइज बोल दिया. एंड रन आप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो x2 minus x1. ये m है. Now let's try and get meaning of this, क्योंकि otherwise ये सब थोड़ा सा ग्रीक लगेगा. प्रथा, all this that I have written, इसमें से कोई भी वर्ड, मान्या, प्रथा, कृष्णा देसाई, does it ring a bell? नहीं, ये सब कुछ तो भी है ना. क्या लिखा हुआ है? हाँ कृष्णा, क्या समझ में आ रहा है इसमें से? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है. तो फर्स्ट आई विल डू अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ दिस. ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, सो दैट प्रथा ये जो बार बार किल वाला निशान कर रही है वो नहीं कर रहे, उसको समझ में आ जाए. तो लेट्स से वी स्टार्ट, वी बुक अ ओला राइड
and Ola wala says book करते ही आपको मुझे 15 rupees देना है. Uber ले लेते हैं, Uber का example करते हैं. So वो बोलता है if you book you'll have to pay 15 rupees irrespective of how much you travel, and you say okay I am fine with that. Then आगे का fare वो calculate करता है, let's say number of kilometers you travel K, and it says I will charge you 10 rupees per kilometer. So 10 rupees into number of kilometers traveled plus booking fees of 15 rupees is equal to total fare. Can I write it like this? Pritha, ये समझ में आ गया मॉडल Uber का? If you understand this model, then if you look closely, what I have done is I have basically, I'm doing that straight line thing where this is C. Number of kilometers you travel is X. Total fare is Y. You know? And this 10 out here, guys, this is 10 rupees per kilometer. ये rate of change है, ये M है. अगर अब आप समझने की कोशिश करो, if you travel, let's say एक टेबल बनाते हैं K versus F. If I travel 0 kilometers but I have booked, I will pay 15 rupees. Right, Pritha? But what if I travel 1 kilometer? What will be my total fare? बोलो. So 25 rupees. 25. What if I travel 2 kilometers? What will be my total fare? 10 into 2 plus 15. कितना होता है वो? 35. 35. What if I travel 3 kilometers, Pritha Yadav? 3 into 10. 30 plus 15. I will pay 45 rupees. समझ में आ रहा है? If I travel 4 kilometers, 4 into 10, 10 rupees per kilometer into 4, 40 rupees plus 15. I'll pay 55 rupees. Are you getting this? Now, with every additional kilometer, what is happening to your total fare, Pritha? Fare कितने से ऊपर जा रहा है? With every 1 kilometer that you travel in addition, your fare is going up by how much? है कि नहीं? If you travel 1 additional kilometer, fare will increase by 10 rupees. This is nothing but what these guys have been talking about. Rate of change, slope, tan theta, rise upon run, y2 minus y1. इसको y2 मान लो 35 को. Because f is y. y1 मान लो 25 को. 35 minus 25 is 10 upon x2. 2 minus 1, 1, 10. So this 10 is telling me that every time I increase k by 1, f will also change and it will change by 10. So slope of line, अभी ये plus 10 है, ये minus 10 भी हो सकता है. Slope of line basically gives me, ये slope बोलते हैं इसको, m is called as slope of line. This is the common name. It is telling me delta y upon delta x. If I change y by something for every unit of x, that is the value of m. Let me come down to tan theta now. ये tan theta कहाँ से आया? So tan theta पे आता है. Just a second. R has returned. I can switch back to my original source. Let me see if I can. Original source नहीं, ठीक है, अभी ऐसे ही चलते हैं. Are you guys there? Am I visible? मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. You guys can see me. Yes, sir. And you can also see my working space. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, तो ठीक है. Then let's. Sir, your video has been paused. I don't know what's happening.
ओके आई एम बैक। चलो, सो ये m था, ये स्लोप था, जिसको भी समझ में नहीं आया ये मुझे रोकना, अदरवाइज आगे फिर दिक्कत होगी। तो m को हमने डिफाइन किया। अब आते हैं टेन थीटा। यू में आस्क मी सर ये टेन थीटा कहां से आया? दिस इज माय कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे आई हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। Let's say this point is x1 y1 x1 y1 and एक और point लेते हैं, this point is x2 x coordinate comma y2 y coordinate. So मैं यहाँ से एक right angle triangle बनाता हूँ, ये एक right angle triangle बना, where this angle is theta. So tan of an angle, अगर ये अभी नहीं आता है तो घबराना मत, बस हम प्रूव करें, tan of an angle is perpendicular this point, this length, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये होता है tan theta, perpendicular upon base. So इसीलिए m को tan theta भी बोलते हैं. But for all practical purpose, right now हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, I will at least want you to give me an interpretation of m. m का interpretation है change in y with respect to change in x. Change in y with respect to change in x. इतना सा बेसिक इंटरप्रिटेशन याद होना चाहिए. जब भी आप 1 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करोगे, आपका फेयर 10 रुपीज से बढ़ता जाएगा. फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर यू पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा. दैट इज m. आर वी गुड हियर? Yes. Okay. Now some important points with respect to m, and this is the last theory part. We go to problems after that. What if m is 0? मुझे आपसे ये समझना है. What if m is positive? मुझे ये समझना है आप लोगों से. And what if m is negative? मुझे ये समझना है. तो m is equal to 0 अभी नहीं लेंगे. Anybody who can give me interpretation when m is positive? क्या मतलब हुआ इसका? अगर m पॉजिटिव है तो क्या बता सकते हो मुझे लाइन के बारे में? Anyone? Theta. हाँ आगे और बिल्ड करो प्लीज. अगर m पॉजिटिव है तो लाइन के बारे में क्या बता सकते हैं आप? तो अगर m पॉजिटिव है दैट मींस स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव. स्लोप पॉजिटिव का मतलब लेफ्ट से राइट में जब आप मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट में लाइन ऊपर जा रही होगी. लाइन वुड बी मूविंग अप. दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप का लाइन. अगर m पॉजिटिव है, लेफ्ट से राइट में लाइन वुड बी गोइंग अप. दिस इज पॉजिटिव स्लोप. द सिमिलर लाइंस, अगर m नेगेटिव है, अगर m नेगेटिव है तो लेफ्ट से राइट में योर लाइन वुड बी कमिंग डाउन. ये नीचे आएगी लेफ्ट से राइट में. दिस इज नेगेटिव स्लोप का लाइन. अगर m का वैल्यू नेगेटिव है तो दिस इज नेगेटिव स्लोप का लाइन. अयान खत्री, Yes, sir. ये ठीक है जो मैं बात कर रहा हूं? Yes, sir. Okay. Now, what if m is 0? What can you tell me about the line where m is 0? Y will be C. Sorry, come again. Line is parallel to the x-axis. Excellent. Whosoever said that, very good. ये देखो, अगर m 0 है गाइस तो यहां पे आ जाओ. m को रखो 0, 0 into x becomes 0, y equal to c. तो y equal to c का लाइन अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, let's say c is positive, I'll have a line which is parallel to x axis. ये जो ग्रीन लाइन है ये वो लाइन है जो पैरेलल है x एक्सिस को. अगर m 0 है तो पक्का यू कैन टेल मी कि सर वो पैरेलल होगा x एक्सिस को. अब वो ओरिजिन के ऊपर है या ओरिजिन के नीचे है वो तो c के वैल्यू से पता चलेगा. यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया c is greater than 0. Line will be parallel to x axis if slope of line is 0. Theta is 0 because tan 0 is 0 if you remember. Sin upon cos, sin 0 0, 0 upon cos, तो वो 0 ही आएगा. तो tan 0 is 0, line is parallel to x axis. What if m is equal to 1? Last googly for you guys. अगर m 1 है तो
What if m is equal to 1? Slope of line is 1. The straight line left से right में ऊपर जाएगा. So slope Are you sure? Are you Sir, sure? it will be perpendicular to x-axis. Perpendicular to x-axis. tan 90 हो गया, ये theta 90 डिग्री हो गया भाई. तो अगर m exactly 1 है, तो जो आपका लाइन है that will be parallel to y-axis. ये ऐसी लाइन बनेगी. Parallel to y-axis. m0 parallel to x-axis. m1 it will be parallel to y-axis. Sorry, m1 नहीं बोलना चाहिए था मुझे. I am very sorry. Not defined होगा तो. m1 नहीं, tan थीटा की बात कर रहा हूं मैं. सो m1 मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थीटा 90 डिग्री. तो m अगर इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है, तो लाइन m1 नहीं. हाँ, m अगर 1 होगा तो जो किसी ने बोला था इट विल बी गोइंग अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो आंसर राइट है. I am talking about tan theta here, so I am talking about 90 degree. If m is infinite, then line will be parallel to y-axis. दो ये वाली कंडीशन अभी रिलेशनशिप में नहीं आएगा. These three are important things that I want you to remember. ये interpretations में आएगा where they may give you value of in that equation and they may ask you something for interpretation. बोलिए, ये इतना सब क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. Now we are good for solving problems, but at the same time we have reached that break point जहाँ पे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए. So it is 12:41 by my watch. 12:46 we meet again. We have a 5 minutes water break. Thank you. So any questions for me as we start with the problems, the exercises करते हैं उससे पहले, do you have any questions on whatever we have done, especially around straight line and जो basic हमने number theory का कुछ part देखा? So are there any questions for me from classroom, from online students? No one? ये सब clear हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कृष्णा, ये सब समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? ठीक है. So what we'll do is, now there are two approach. I think all those who are having their books, they can refer to those specific questions which I'll tell you, and you can refer to those questions, solve जैसा कल किया था, and then we will discuss them. In case everybody is getting it right, I may not discuss that unless and until you want me to. जिनके पास book नहीं है, I think that's only Tanush. For Tanush, I will also put question on screen. So if you want to do problems looking at screen, you can do that. If you want to solve referring to the book, either ways, I am okay, you can do that. So चलो चालू करते हैं. And the first question that I want you guys to solve, if you have book with you, open करो chapter 1 पे आ जाओ आप लोग. And if you are there on chapter 1, this is the first problem that I want you to solve. Question number 6 from your book. This is verbatim word by word SAT problem. Exercise 1.1 question number 6. Let me give you 1 minute ka time. Please solve. If you are sharing answer with me online, please make sure that you do that by sending me on the chat directly and not to everybody. Question number 6, chapter number 1.
Correct, Madhav. If A and B are odd integers, which of the following must also be an odd integer? Yaksh, Ayan, correct. Tanush, I'll request you to redo. Attempt एक बार फिर करो. Ayan Varekar, correct. So, what is the position inside my class? ठीक है तनुषी, हम लोग साथ में करते हैं. Okay guys, let's discuss this. I don't see, who do I don't see? Pratha Yadav नहीं है, बाकी सब है. So, Rishikesh, we start with you. Please announce your answer. D. Okay, Goswami, bolo. D. D as in Delhi. Arushi, D. Manya, क्या बोला मान्या ने? D. Same. Okay, and Krishna Desai. So C. C और B भी आ रहा है, तो ये तो थोड़ा सा सिंपल सा प्रॉब्लम है. But the only thing is even odd के ऊपर based है, and you may get caught in that googly, otherwise ये गलत नहीं होना चाहिए. So Tanush and Krishna, this is for you guys. A and B are odd integers. This is known. Which of the following must also be odd? Let's see. A is odd. Odd plus 1 will give me even. Even into odd. Even into odd will always give me Even. even. तो जो भी ऑप्शन में 1 है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता. Now again same. A is odd plus 1 will give me even. Even plus odd. Because B is odd दिया हुआ है. Even plus odd will always be odd. तो आंसर होगा 2 वाला या ये वाला. Only 3 तो आंसर नहीं हो सकता. आगे चलते हैं. This is odd plus 1. Odd plus 1 will give me even, and even minus odd Odd. will always be odd. Answer is option D. 2 and 3. Roman 2 and 3. Krishna, is that okay? Anush, okay? सर मुझे लगा Oh, क्वेश्चन yes, 1 का आंसर. Sorry? सर मुझे लगा क्वेश्चन 1 का आंसर बोलना है. नहीं, 1 का नहीं बोलना है. 6 का. तो ध्यान से सुनना, मैं जो क्वेश्चन नंबर बोलूंगा वही क्वेश्चन करना है आपको. तनुष, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Let's go to the next problem. जो सिंपल सा इवन ऑड के ऊपर बेस्ड था. Let's look at this. 30 seconds. Question number 4. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, वहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर बुक. X plus 3 by 2 is an integer. Correct, Madhav. Okay, Aya. Akshata, waiting for you. Yes, sir. Arushi, हो गया ये? Yes. I mean, okay. Both of you? Yes, sir. Okay. Okay. Okay.
अयान तुम्हारा ये मे भी नहीं जाने वाला है, चलो अभी करते हैं अयान. So before that, let me enter the class. Question number 4 from your book. Arushi, we start with you. बताओ अपना आंसर. Sir, A. A. Arushi Zade. Did I get it right? हाँ. बताओ. Sir, D. D. मान्या. Sir, D. ये भी D बोल रही है. हाँ. Okay. कृष्णा. D. A. D, C. Question number 4 solve कर रही हो. C. Third option. C option. Third option. Question number 4. And Rishikesh. D. यार इतने अलग अलग आंसर्स हैं. D. Okay. So अयान वारेकर से चालू करते हैं. He will solve this for us. कौन से ऑप्शन को डिफेंड कर रहे हो अयान? सर मेरा अनश्योर है. हाँ, इसीलिए तो आपसे चालू किया है मैंने. कौन से अनश्योर ऑप्शन को डिफेंड कर रहे हो? बी, राइट? हाँ. चलो लेट्स डू दिस. x plus 3/2 is an integer. ये integer है. So x plus 3/2 is an integer. So can I say x plus 3 will be 2 into an integer? बोलो. Yes. Okay. अब they are asking, then x must be 100% यही होना चाहिए जो हम यहाँ पे सोच रहे हैं. x must be. So you are saying it should be a positive integer. एक तो पक्का है कि वो 2 का मल्टीपल होगा क्योंकि 2 into an integer है. What if x is -5? Put x equal to -5, Ayan. It will be -2. -2 जो कि minus 2 का मल्टीपल है तो पॉसिबल है. x नेगेटिव भी हो सकता है. हो सकता है ना? हाँ हो सकता है. सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है. हाँ. Now let's look at, I mean you look at any other. वो नेगेटिव हो ये भी जरूरी नहीं है because put x equal to 5. But whatever all said and done, x will always be an odd integer because 3 is odd. This part will always be even. और ये odd है तो पक्का x को हमेशा odd ही होना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों का सम कभी even नहीं आएगा. हाँ. आंसर इज 100% बिकॉज यहाँ पे मस्ट दिया है. पुट दिया होता तो कुछ भी हो सकता था. मस्ट दिया है तो आंसर विल बी डी. डी एज इन दिल्ली. चलो गुड. सो ये देखो, लेट मी ऑल्सो मेक वन पॉइंट. दिस इज नॉट सो मच अबाउट योर इंटेलिजेंस. ये ऐसा नहीं है कि इवन ऑड हमको आता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आता है. इट्स मोर अबाउट योर अवेयरनेस कि उस समय आर यू अवेयर कि कुछ और ऑप्शंस हैं और आपने केसेस को टेस्ट कर लिया. ठीक है. Let's go to next problem. The next problem that we are doing right now. ये क्लियर हुआ कृष्णा देसाई? Yes. मल्टीपल ऑफ 3 होगा कि नहीं वो तो हमने उसी केस में देख लिया था. जरूरी नहीं है मल्टीपल ऑफ 3 हो. I want you guys to solve. This is a beautiful problem. Question number 5. And let me give you 90 seconds, 1.5 minutes. Very good question. Question number 5 from your book. When 15 is divided by positive integer k, remainder is 3. For how many different values of k is this true? 1, 2, 3, 4. Pritha, question number 5. You can see on the screen as well. उसके बुक में देखने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे भी है क्वेश्चन. तनुष, थोड़ा सा समय बचा है. Why don't you try it once again? एक बार और ट्राई करो. मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट अवेयरनेस. So I'm waiting for Akshata. Ayan Warekar ने नहीं भेजा है, Ayan Khatri ने भेजा है आंसर.
माधव के लिए भी मैं वेट कर रहा हूं, उसका आंसर भी नहीं आया है, एंड देन वील एंटर द क्लास। चलो डिस्कस करते हैं। सो मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों के आंसर पता चल गए। आई एम गेटिंग इनसाइड द क्लास एंड लेट्स सी हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस। कौन सॉल्व कर रहा है मेरे लिए? आई एम नॉट गोइंग इनटू आंसर, आई वांट समबडी इन द क्लास टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हु इज डूइंग दैट? Rishikesh and nobody? And okay. So Manya Srivastav, you are doing this problem for us. आपको क्या करना पड़ेगा मान्या? आपको ना आगे आना पड़ेगा, आगे आओ, जहाँ पे ये प्रथा है वहां पे आ जाओ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आ जाओ, वापस चली जाना वहां पे, एंड समझाओ कैसे। कैसे नहीं, सबसे पहले तो बताओ क्या आंसर है। Sir, answer is C. आंसर इज सी। गुड बेटे, हाउ? Sir, if we divide 15 by 4 and 6, we can get remainder as 3. एक ये स्पॉटलाइट और एक, जस्ट अ सेकंड, एक मेरा स्पॉटलाइट, राइट? यस मान्या। So they are saying that there is a number called 15, and when this 15 is divided by k, the remainder is 3. Tanush, ध्यान से देखना. So they are asking how many such values of k, for how many such values of k is this possible? Manya, go ahead. Sir, 3, हाँ, कौन से 3 values? 4 and 6 4 and 6 and 8. and नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 4 and 6 and नहीं, सिग्नल मत बनाओ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ अभी क्लास में। 2. So let's put k as 2. If you put k as 2, will you get remainder 3? मान्या, अगर k को 2 रखा तो रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा ना मान्या। 2 7 14, बोलो। तो 2 तो नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। कैन k be 3? नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा। कैन k be 4? 4 3s are 12, रिमाइंडर 3 चलेगा। कैन k be 5? नो। कैन k be 6? 6 2s are 12, remainder 3. Can k be 7? No. Can k be 8? Nahi. Can k be 9? Remainder will be 6. Can k be 10? Remainder will be 5. 11. Can k be 12? 12 ones are 12, remainder 3. So k can take these 3 values for satisfying the given condition. Tanush, तुमने आंसर 4 कैसे निकाला? Which is the 4th value? Thank you मान्या। वो तो मान्या, ये शायद थोड़ा सा आंसर तो राइट आ गया, बट 2 नहीं, वो 12 होगा। तनुष बोलो, हाउ कम 4? सर कौन सा एक और वैल्यू को ले लिया था आपने? सर 2 को लिया था मैंने। 2 को भी लिया था और 12 को भी लिया था। तो पहली बात तो 2 को लेते ही अलार्म बेल बजना चाहिए कि एनीथिंग डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 3 कैसे आ रहा है। रिमाइंडर मैक्सिमम 1 हो सकता है, 0 या 1 होगा रिमाइंडर। चलो, सो वी गो बैक। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि अगेन एसएटी का, एंड अगेन इफ यू मिस रीड, ओवर रीड, गड़बड़ कर दोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स, आई गेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक। very good problem based on a simple arithmetic का rule. If n and p are integers greater than 1, p is a factor of both n plus 3 and n plus 10. What is the value of p? ये short answer type है, आपको इसमें आंसर टाइप करके मुझे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। यस, खत्री साहब एकदम सही है। चलो, लेट्स डू दिस। सो आयान, आई विल बी इंटरेस्टेड इन मेथड, तुम्हारे साथ चालू करेंगे जब डिस्कशन चालू होगा। ओके सर। हाँ, आयान खत्री के साथ। Question number 3 on your book.
Pritha, तुम साइड में आ जाओ so that I can see you. Thank you. What is the value of P? Yeah, got that, Yaksh. मिल गया आंसर मेरा. चलो guys. Shall we try this together? What say? Yes. ऋषिकेश, हो गया क्या ये क्वेश्चन आपसे बेटे? Yes, sir. Okay, Rishikesh, please announce the answer. 7. P का value is 7. Any idea how? Arushi Goswami, ये समझ में आया? कैसे आएगा 7? ये कुछ पता है क्या? The other Arushi? Okay. So मैंने किसको बोला था ये? Ayan Khatri? Yes, sir. So you will do this for me. मैं एक मिनट मेरे white board पे जाता हूँ, तुम मुझे guide करना and I will solve on your behalf. ये इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाता हूँ मैं. What am I doing? Add spotlight. चलो, Ayan, please help me out. बताते जाओ. Yes, sir. So मैं the पहले यहाँ पे question लिख देता हूँ Ayan, quickly. okay. N and P both are integers. आरुषि साढ़े देखो इसको. N and P both are integers. Given N and P are greater than 1. Given N plus 3 when you divide by P. N plus 10 when you divide by P. They are divisible. बोले तो remainder is 0. ये question में दिया. ये clear है ना? आरुषि? Yes. चलो आयान आगे. अब मुझे बताओ कैसे करें. Yes, sir. So out of n plus 10 and n plus 3, n plus 10 is greater. So I subtracted n plus 10 from n plus 3 from n plus 10. So I'll get 7. 7 is a prime number. So if P is equal to 7, then only it will be divisible by then only it will be a factor of both n plus 3 and n plus 10. Superb. So what he is saying is, वो क्या बोल रहा है? अरिथमेटिक का एक बहुत बेसिक सा रूल है, पहले वो समझते हैं. Let's say I have a number 33. Let's say I have another number 63. 33 is divisible by 3. 63 is divisible by 3. So arithmetic says that if a number can divide two different numbers, then that number will also be able to divide difference of these two numbers. Okay? ये वाला रूल आयान खत्री ने यूज किया कि अगर p n plus 3 को डिवाइड करता है और p n plus 10 को डिवाइड करता है तो इन दोनों का डिफरेंस n plus 10 minus n plus 3 भी p से divisible होना चाहिए. This should also happen. If that is the case, then this will be n plus 10 minus n minus 3. So 10 minus 3 ये 7 बचेगा. 7 is divisible by p. अगर ऐसा होता है तो p की केवल दो ही वैल्यूज पॉसिबल है. There are only two values of p possible such that it can divide 7. Which are these two values? P can be either 1, 7. p can be 7. अब p 1 नहीं हो सकता because it is given in the question. ये देखो n and p are greater than 1. तो ये तो possible नहीं है. There is only one value of p that is possible and hence answer is 7. तो आपके वो बॉक्स में आपको टाइप करना है 7. बोलो अयान वारेकर. Yes, sir. ये ठीक है जो हमने किया? हाँ. Pritha, did you get this? Arushi, is this good, Pritha? But you don't look confident. बताओ क्या समझ में नहीं आया? No, I got it, but I'm not confident that I didn't get it. I didn't. But is it clear now? ये समझ में आ रहा है? If a number divides two different numbers, then number will also divide difference of these two numbers.
So if P divides this given in the question, then it should divide difference of them. We were lucky that we got a special number because this is a prime number. Now P has to be 1 or 7. Otherwise P prime number को divide नहीं कर सकता because 7 को 1 या number itself divide कर सकता है. P 1 हो सकता है, 7 हो सकता है. Question में दिया N and P are greater than 1. तो P 1 तो नहीं हो सकता. P का value is only 7. Possible. We go to next problem, guys. So this was a great, good problem. ये नहीं करते हैं, ये simple है. Let's do this one. Question number 41 on your book. थोड़ा सा हिप हॉप है ये, but 41. और जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे देखो. Question number 41. If x by 3 is equal to x to the power 2 x square, the value of x can be, ये must नहीं है, can be which of the following? Roman 1, Roman 2, Roman 3. Please solve this. 1 minute का time. 41. Good speed, Ayan Khatri, good speed, bete. Correct. Not much to write here. Let's see. Akshata, you there? Not getting any response from you. Yes, sir. अभी तक का सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. तनुष, थोड़ा सा समय है, रीचेक. क्लास में क्या पोजीशन है? ऋषिकेश का हो गया है, आरुषि गोस्वामी का हो गया, राइट? दोनों आरुषि का हो गया है. देसाई जी हो गया है? ओके. सो कृष्णा देसाई, प्लीज अनाउंस द आंसर दैट यू हैव गॉट ए बी सी डी में से. सॉरी, डी फॉर दिल्ली. ठीक है. हाउ कृष्णा? सर पहले तो x स्क्वायर फिर वो x by 3 को मैं उस साइड लेंगे फिर तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर by x is equal to 0. So you have 3x square. क्या करूं मैं? 3x square is equal to x. ऐसे लिख दूं? हाँ कृष्णा? Krishna, what do you want me to do? x square by x. 3x square by x. Cross multiply किया. अच्छा, is equal to? सर 0 ले लिया है. 0 ले लिया है और आंसर करेक्ट आ गया है आपका. 0 ले लिया है आपने इसको. अरे 0 कैसे ले लिया? अगर 0 ले लिया तब तो फिर लक फैक्टर है तुम्हारा. चलो वापस करते हैं. So somebody else. Madhav, you will help us? Yes, sir. बोलो. Sir, in the given options, first we can take minus 1 by 3 there. We can replace x by minus 1 by. अलग मेथड है भैया. What he is saying is आपको क्योंकि x का वैल्यू करना है तो he is going by these Roman options. So वो बोल रहा है substitute x की जगह minus 1 by 3. तो x की जगह रखो minus 1 by 3. Left hand side becomes minus 1 by 9. माधव तुम यही बोल रहे हो ना? Yes, sir. Is equal to right hand side becomes minus 1 by 3 का square which will be plus 1 by 9 and they are not equal. Yes. तो Roman 1 तो नहीं होगा. जहां भी Sir, Roman and we can do with 0 and 1 by 3 also. अब 0 को रखो. 0 by 3 is 0 and 0 का square is 0. LHS equal to RHS. ये तो true है. तो only 3 वाला आंसर तो नहीं हो सकता. I lost my pen. Let me get it back. ये तो नहीं हो सकता.
अब x की जगह 1/3 रखो, तो 1/3 लेफ्ट हैंड साइड में 1/9 मिलेगा, राइट हैंड साइड में 1/3 का स्क्वायर अगेन 1/9 मिलेगा। LHS इक्वल टू RHS, ये साइड इक्वल्स है। ये हो गया आंसर डी। एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड। उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आप उसके एक्स स्क्वायर को कट करने के लिए उसको डिवाइड करोगे और एक्स निकालने की कोशिश करोगे तो एक पॉसिबल वैल्यू आएगा, जबकि यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज हैं। बेटर गो बाय ऑप्शंस। और ये सब आप थिन एयर में कर सकते हो, वहां लगा के विजुअली कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर इज ऑप्शन डी। मिस यादव, ओके, वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वापस आते हैं, एकदम से 41 पे चले गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं 18, क्वेश्चन नंबर 18, 30 seconds. See if you can do it without using pen pencil, but if you want to use it, pen pencil. बयान खत्री, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दिया इसको और कुछ गड़बड़ हो गई है, वापस करो। माधव, सेम सेम इशू। यस, गुड अयान वारेकर। सो गाइस, ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ऋषिकेश, प्लीज अनाउंस योर आंसर। सर B4। B4। तो ये सब मेरे ट्रैप में फंस गए। यक्ष त्रिवेदी, माधव, अयान, अयान वारेकर को छोड़ के, इंक्लूडिंग ऋषिकेश। चलो ऋषिकेश, सॉल्व करते हैं। बताओ मुझे कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ मेरे माउस से सॉल्व करता हूँ। हेल्प मी। 3a + 2 by a is equal to 11a. A can I take on right hand side, Ayan? नहीं, अयान सॉरी, ऋषिकेश। सर A को राइट हैंड साइड लेके चले। ठीक है, सो दिस विल बी 3a। मैं यहीं पे स्क्रिबल कर रहा हूँ, होप यू आर एबल टू सी। दिस इज इक्वल टू 11a। नेक्स्ट व्हाट? सर 3A को राइट साइड में लेके जाओ, 8A हो जाएगा। 8a is equal to 2. 2 2. So a is equal to, 1/4। अच्छा मैंने गड़बड़ किया है क्या? a is equal to 1/4। तो सर 4 और A को ट्रांसपोज कर दो तो 1/A = 4 आता है। Sir, और 1/a will be equal to 4 हो जाएगा। 4. 4. So answer is 4। हाँ, आंसर सही है, 4 राइट है। कितना 1/4 आ रहा था क्या? मैंने माधव आई थिंक गलत बताया ना आपको? Yes, sir. आंसर 4 होगा, बिकॉज 1/a पूछा है एंड नॉट a। तो आई एम सॉरी, आई थिंक यक्ष त्रिवेदी को भी मैंने उसमें गड़बड़ कर दिया था। a is 1/4 and they want 1/a। अयान वारेकर, ये देखो, Oh, okay. तो आंसर वुड बी इसका रेसिप्रोकल एंड हेंस 4। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट मच आई कैन ऐड अदर देन दैट कि बस ये रेसिप्रोकल का ध्यान रखना। दिस इज चैलेंज प्रॉब्लम। अगर आपके पास बुक है तो चैप्टर 1 के एंड में चैलेंज प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसमें देखो, और नहीं तो ये स्क्रीन पे है। Which of the following is equal to value above? The question comes from Khan Academy level 4. Let's solve this. Which of the following values is equal to the value above? अभी हमने exponents और उसके कुछ rules किए थे. See if you can solve this. Yes.
x to the power 1 by 2 plus x to the power 3 by 2. How else can you write among the four options? Very nice. Yes, correct. Both of you. Yakshanaya. Akshita, Madhav, Tanush. And in class, is there any answer? आरुषि झाड़े बोलिए ऋषिकेश के पास आंसर है ओके ठीक है ऋषिकेश पुट योर हैंड डाउन लेट्स सॉल्व दिस ऋषिकेश व्हिच ऑप्शन बी 7√6 so Yash Trivedi please help us understand your method for getting to the answer मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ यश मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और तुम हमको हेल्प करोगे ये स्पॉटलाइट बनाया मैंने इसको रिमूव करते हैं चलो यश So sir, you can write 6. मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 1 मिनट Okay. नाउ यू कैन हेल्प मी So you can write 6 both sides. 6 as √6 to the power 2, as it will give 6. So √6 to the power 2. So 2 into 1 by 2 by a to the power m bracket n method. So it will be √6 plus √6 to the power 3. So √6 plus 6√6, 7√6. रुको ठीक है सो आप मुझे क्या बोल रहे हो इसको आई लेट इट रिमेन लाइक दिस टर्म बाय टर्म चलते हैं राइट Yes sir, but you can write 6 as √6 to the power 2. रुक जाओ √6 to the power 2 Bracket 1 by 2. Right whole bracket 1 by 2 is same on √6 to the power 2 bracket 3 by 2. Power 2 sir, √6 to the power 2 bracket 3 by 2. अच्छा ये इसका मेथड है भाई ठीक है Yes sir, so that 2 and 2 on both the sides will be cancelled out, and √6 to the power 1 plus √6 to the power 3, when you resolve it is 7√6. something like this Yes sir. तो ये क्या हो जाएगा 6√6, √6 plus 6√6. √6 plus 6√6, 6√6 which is 7√6. so this is 7√6 ये समझ में आया मिस यादव so this is kind of arrangement he has done but there could be multiple ways जरूरी नहीं ऐसे ही करना है और कोई तरीका है आयान खत्री ये करेक्ट है Sir, I squared the numbers. So, हाँ बताओ प्लीज हेल्प मी जैसे इसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे ही जाओ स्लो एंड हेल्प मी आउट yes, sir. So 6 raised to 1 by 2 can be written as √6. And 6 raised to 3 by 2 can be written as √216. रूट 216 or 6 cube, root of 6 cube. 6 क्यूब बोल रहे हैं आप Yeah, root of 6. तो मैं इसको 6 क्यूब ही लिखता हूँ 216 नहीं लिखता अभी Yes, sir. ठीक है Sir, when you square this using a plus b the whole square, you will get. ओह अच्छा इतना सब Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सो गाइस इसको देखो एक और तरीका हो सकता है तो इसके मेथड में नहीं ले रहा हूँ आई थिंक हम और कंफ्यूज होंगे ये है 6 1 by 2 6 1 by 2 ये 6 3 by 2 तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 6 1 by 2
into 3, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ये वाला स्टेप, इफ यू सी यही वाला स्टेप है ये। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट, अगर आप इसको ऐसे लिखें 6 स्क्वायर इंटू 6 और ये रूट, तो एक 6 स्क्वायर बाहर आएगा, तो यू गेट 6 रूट 6, ऑलरेडी एक रूट 6 है, तो 7 रूट 6 डायरेक्ट लिखो। ये वाले पार्ट को आई कैन राइट एज रूट ऑफ 6 क्यूब, तो 6 स्क्वायर 6 बाहर आ जाएगा, एक 6 अंदर रह जाएगा, तो दिस पार्ट इज नथिंग बट 6 रूट 6, और एक रूट 6 बाहर है, तो रूट 6 प्लस 6 रूट 6 इज 7 रूट 6। अयान कतरी? Yes, sir. I realized that when I solved it, like after I solved it like that. अभी समझ में आया ये? आरुषि गोस्वामी, पृथा? 6 cube, this is like 6 3/2, so this is root 6 of 6, root of 6 cube. 6 cube is nothing but 6 square into 6, एक square बाहर आएगा as 6 बन के, ये वाला अंदर ही रहेगा, so this is 1 times 6 root 6, this is 6 times root 6, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और ये 7 times root 6 बन जाएगा। That's all. In 2 steps we'll be able to solve it. So this was one challenge problem. Let's solve one more. This is second challenge problem in your book, otherwise on screen. 4 1/5 into 3 2/5 is equal to y to the power 1/5. What is value of y? Okay. Okay, Rishikesh. चलो ऋषिकेश, हेल्प मी आउट, साथ में करते हैं। सर 1/5 को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, सो गो स्लो। क्या करना है? 1/5 को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो तो वो होल पावर 5 हो जाएगा। 1/5 को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो तो वो होल पावर 5 हो जाएगा। So instead we can multiply all the numbers with to the power 5. Raise both the sides by 5. Yes, sir. ये बोल रहे हो आप मुझे? Okay, raising both the sides to the, because I am doing same operation on both sides of the equation, possibly this is allowed. तो अगर इसको raise 5 किया मैंने, so 4 will become 4 will become 4 into ये बन जाएगा 3 square, उसका पावर चला जाएगा, will be equals to equal to y. 3 square is 9, 9 4s are 36. 36. So y becomes 36. Accepted. Answer is 36. ये इक्वेशन है ऑलरेडी, दोनों को हमने दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन किया, रेजिंग द एंटायर क्वांटिटी टू द पावर 5। अब ये 5 को जब आप अंदर लाओगे, ये वाला 5 अंदर आएगा यहाँ पे और एक यहाँ पे आएगा, बिकॉज हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया है, a into b to the power m can be written as a to the power m into b to the power m। ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, तो अगर 5 को होल रेज किया, 5 अंदर आएगा, ये 4 बचेगा और ये 3 स्क्वायर बचेगा, इसको सॉल्व करो और यहाँ से ओनली y बचेगा। आंसर इज 36। दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। चलो, परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर बुक, 50।
I think this is more of logical reasoning than mathematics. Let's see. How many students are there in class? मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा है, बट फिर भी करो. Okay, so I've got answer from Ayan and Yaksh and also Tanush, I think. Okay. Okay, Pratha. Pratha, you want to go first? The option B. Option? B for ball. So you're defending this option. So let's see. How have you solved this? Please share your method with me. I used 12. So 12 के पीछे 11 रह गया. 22 and 20. So let's say we arrange them in some order, and let's say we arrange them in ascending order. Stacy noted that she's both 12th tallest. So if we arrange them in order, let's say there are 11 students, then we have our Stacy here in terms of increasing height. So she's 12th tallest and 12th shortest in her class. तो यहाँ पे सबसे tallest person है. अगर यहाँ से हम count करेंगे तो 11% from behind and then again Stacy. If everyone in class is of different height, how many students are there? 11 students आगे, 11 students पीछे, 22 and 1 are student Stacy. Answer is 23. Right guys, and not 24. ये ध्यान रखना बस, ये catch है इसमें. We go to next problem. एक और question करते हैं. Let's do this one. 45 seconds. 59. Question number 59. A simple word problem. How many girls are on bus? Okay. So again, I'm interested in your method. How are you guys solving? Why are you taking so much time? कैसे कर रहे हो आप ये? Madhav, how have you done this? Sir, it is written 4 boys get off the bus and twice as many girls as boys are on the bus. So so I just doubled 4, so I got 8. Sir, because 4 is double, sorry, half of 8. Sir, So there is some number which subtracted by 4. That number then becomes half of number of girls on bus. So okay, ठीक है. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ के and I can go by options and do it fast. There are same number of boys and girls on the bus. They want number of girls on the bus. So let's say number of girls is 4. So दोनों 4 है. ये आपके साथ कर रहे हैं इसलिए इतना समय लगेगा. Boys and girls 4. 4 boys get off the bus. So ये 0 हो गए. Now ये condition पूरी नहीं होगी. Twice as many girls on bus as boys. So girls should be double the number of boys. नहीं होगा. Answer cannot be 4. Let's say had it been 6, 4 boys get off, then there are 2 boys. Again, boy is not double of, girls are not double of boys, rather they are 3 times. ये भी answer नहीं है. Let's say they are 8, 4 boys get off, there are 4 boys left, 8 girls left. Yes, girls are double the number of boys. Answer is 8. Simple, go by options. Check करो और आगे बढ़ जाओ. Nothing else. I want you to solve question number 33. The table above represents relationship between x and y. Which of the following linear equation best describes the relationship? The best way is
put values of x and y from the table into these equations and check. So let's say option A is correct. X is 1, y is 3. नहीं, option A में नहीं हो रहा है, हटा दो. Option B पे आओ. X is 1, y is 3. X को रखो 1, y आता है 5. नहीं होगा. Option C, x is 1, y is 3. True. X is 2, y is 7 हो रहा है. नहीं. Option C भी आंसर नहीं है. D को चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो आंसर D होगा. आंसर is D. Right, guys? I'm going ahead. Question number 35. हाँ, ये करते हैं. Let me give you some time to think on this. $35. How old was a person exactly 1 year ago if exactly X years ago the person was Y years old? So if you're not perturbed by the wording, बहुत सिंपल है. इन सारे क्वेश्चंस में, और ये आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लिखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. द आइडिया इज टू फाइंड द प्रेजेंट एज. सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालो. हाउ ओल्ड वाज दैट पर्सन एग्जैक्टली 1 year ago? ओके. If exactly X years ago, person was Y years old. Person was Y years old X years ago. So can I say person का present age Y plus X है? अगर आपने present age निकाल लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं दुनिया में. How old was this person exactly 1 year ago? ठीक है, तो present age है Y plus X and 1 year ago age होगा Y plus X minus 1. Answer is option D. खत्म. Try and find the present age. That's the whole idea. Am I clear here? Krishna Desai, Rishikesh, ये सब समझ में आ रहा है? Okay. Next problem. ये समझ में नहीं आया तो पूछना, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज्यादा इसमें मेरे पास डिस्कशन करने को कुछ नहीं है. Word by word SAT problem. Excellent problem. Let me give you 1.5 minutes. Linear relationships. Please solve. Rather nothing to solve, give them an equation. Mughal का working का equation दो. Okay, Pritha, hold. Right, Rishikesh. So sorry, I think रेखा आप हैं अभी इस मीटिंग में? रेखा? I don't know.
So guys, there's some issue where I have lost all controls, but we can solve this problem. मैं share तो फिर भी कर सकता हूँ. तो पहले classroom में जाते हैं and you guys can announce your answer A, B, C, D and then we'll solve this. कैसे करेंगे? I don't know. I've lost all controls. Anyway, bolo. Pritha, you raised your hand first. Yes. B. Okay. Rishikesh. B. B. Arushi. Goswami. Any answer, Arushi? B. Okay. And Krishna. And Manya. So some of you are getting B, others are getting C. Let's see. So the question says, quickly let me see. So it says, to edit a manuscript, Mughal charges $50 for first 2 hours, $20 per hour after first 2 hours. Which of the following expresses the amount? Which of the amount in dollars C Mughal charges if it takes him X hours to edit a manuscript where it is given X is greater than 2. तो क्योंकि आप लोगों को मेरा ये white board दिख रहा है and somehow वही spotlight पे रह गया है. So let's see. इसको तो yes इसको कर सकते हैं. कैसे करेंगे? So total charge is C. This guy charges $50 for first 2 hours and उसके बाद plus $20 charge करता है after first 2 hours per hour after first 2 hours given X is greater than 2. ये तो दिया ही है question में. This is the charge. So 50 plus 20x minus 40, or this can be written as 20x plus 10. This is the charging model for Mughal and not the other way around. So answer हो जाएगा जो भी option है. ये कौन सा option है? B. B. Yes. Answer is option B and not C. अगर C आपने mark किया तो एक छोटा सा ध्यान रखना. I hope this particular part is clear to you. ये x minus 2 कहाँ से आया? नहीं clear है तो पूछो मुझसे. ये clear है? Yes, sir. Okay. So with this we will come to an end to this session. Though there are some more problems जो आप as homework करेंगे and in your next class, which will be a physical class, next Sunday maths का class physically होगा. So in case if you want to attend from Kharghar, please come down and जब हम मिलेंगे तो ये physically मिलके इस session को करेंगे. Coming Saturday is again a physical class of English that will be taken by Anubhav sir. और Sunday को maths का class वो भी physical होगा. So accordingly you plan and you can come down to branch. Thank you because I've lost control. ये working space ही सिर्फ उस पे बना हुआ है, but I'm done for the day. Thank you so much. Okay. Thank you. Bye bye. Rekha. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, Ayan. Bye. हाँ सर. अरे आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपको वो होस्ट बनाना था बिकॉज मैं मीटिंग से बाहर हो गया था. एनीवे अब आप क्लोज कर दीजिएगा मीटिंग प्लीज. सर एक सेकेंड मुझे आवाज नहीं.